So this is the question number 9 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic exception handling in Python. So in this particular question a Python code has been given to you and उसकी लाइन नंबरिंग कर रखी है ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ दिस गिवन सिक्स स्टेटमेंट्स व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स द एरर. तो लेट्स सी वन बाय वन एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हिच स्टेटमेंट गिव्स द एरर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने फंक्शन डिफाइन किया है, इसके अंदर फंक्शन हेडर क्या है आपका, फॉलोड बाय डीईएफ मैक्स एंड एल, दिस वन इज करेक्ट. देन सेकंड केस में क्या करा है आपने, एल इक्वल्स टू एल ऑफ जीरो, दैट मीन्स एक लिस्ट है उसको क्या फर्स्ट एलिमेंट आपने एन को असाइन कर दिया, दिस इज ऑल्सो वैलिड स्टेटमेंट. फॉर आई एन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू इटरेट लिस्ट ऑफ जो भी लिस्ट है आपकी एल, उसको आप इटरेट करना चाह रहे हो वन बाय वन. Now in the line number 4, statement number 4, this one is incorrect. Why? Because for comparison, we need to have double equals to. जो स्टेटमेंट 4 में गिवन है दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर विच शुड नॉट गो विद इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के साथ क्या आना चाहिए आपका, कंपैरिजन ऑपरेटर. नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या है, यू आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यू आई टू एन, एंड लाइन नंबर 6 में क्या कर रहे हो आप, रिटर्न कर रहे हो एन. Hence for this one option number C is the correct one. Why? Because statement number 4 will give you error. Error क्या रहेगा आपका कि you need to use comparison operator in place of assignment operator. If you wish you can run this one on IDE. You will see कि जो हमने अभी बताया आपका similar output आपका आएगा. Now based on the similar concept we have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the type of the error this particular code contains. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.